Bismillahirrahmanirrahim. So we started talking about derivative last time and revisited the concept of left derivative and right derivative. And we will be using this limit to evaluate the left-hand derivative and this limit to evaluate the right-hand derivative of any function. We say that the function is derivable if these two limits are equal. So for derivability at any point on an interval means that the function is derivable at all the points inside A and B, that means interior points of the interval. And at A, the right-hand derivative exists, and at B, the left-hand derivative exists, and that makes a function derivable at an interval, on a closed interval. So we considered some examples and worked out the left-hand derivative and the right-hand derivative using these limits. This is for left-hand side, and this is for the right-hand side. If the two results are same, then we say the function is derivable at any point C between A and B. And of course, for right derivative at A, we find it out that it is 0. And at the left end, when we consider the interval to be 0 to 1, previously the interval was considered arbitrary, but here it is interval from 0 to 1. So at 0, you have to get the right-hand derivative, and at x is equal to 1, you have to get the left-hand derivative. If the left-hand derivative and the right-hand derivative exists at the endpoints respectively, the left and the right, and every points inside interval 0 to 1, if the function is derivable, then we say that the function is derivable over the whole closed interval. We consider this example, and where function is piecewise defined, wherever the two pieces separates, our concern about continuity of derivability is this. You already know that function mod x is not derivable because it has two branches. One on the right side, y is equal to x. One on the left side, y is equal to minus x. And at x is equal to 0, when you try to find out the left and right hand derivative at x is equal to 0, from right you get 1, and from left you get minus 1. And this example, I think I discussed the details of this example, and we'll come to similar examples later on when I discuss the series, the exercise on this. We discussed the idea that if function is derivable at any given point, then it is necessarily continuous there, where, however, the converse is not necessarily true. We will see lots of examples where the derivative is continuous, but it's not derivable at a particular point. This I discussed in the end of the last lecture, that Weierstrass described one function which is continuous everywhere, but no differentiable nowhere. And I also consider another example from theory of fractals, how a curve developed by starting with the line segment and skipping the middle third and erecting a right equilateral triangle on that. And for each segments of the curve, we further remove the middle third and erect a right equilateral triangle
Continuing in that way, we get a curve which is continuous everywhere because curve is connected but not derivable at everywhere, because when the process approaches infinity, there are edges at everywhere. So now, generally in the books, this kind of examples are given. And I hope you can study the differentiability at the given points. Uh, all of these examples are examples where functions are continuous at the given points, but not derivable at the indicated points. Now, if two functions are derivable at some points, then there's some function, the difference function, the product function, and the quotient function are derivable, and these can be proved using the limit definition of the derivability. But quotient function is not actually derivable at a point where the function, the denominator is 0. So it should not be 0, and then it is derivable. And all these are continuous as well. If a function is derivable at C, then मैंने आपसे कहा था कि इस रिजल्ट को देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा कि function is derivable at C, if C is not 0, then 1 upon f is also derivable. Explore it yourself. I hope you have done it. I mentioned that exercise on page 190 and 191, whose images are included here. इसको भी आप explore कीजिएगा. I will like to consider one of the functions here in question number 1. If you want me to discuss the derivability of that function, I can discuss right now. First function is constant. And yes sir, part 3 or part 4 में से कोई एक कर लें. Okay. So part 3 is under root function, square root function. So I switch to whiteboard and try explaining the idea of the function root x. Now root x is required to be derivable at 4. Now if you want the derivability of this at 4, we know that this function has a graph of this type, and at x equal to 4, the value of the function is 2, and this is continuous. So जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं कहूँ कि इस function को analyze करें तो value of the function is first and foremost. So f4 is root 4. The value of the function is 2. And if you go for left limit, x approaches 4 from left side of this, I'm not working out, but this will also come out to be 2, which is also the right-hand limit of the function. So this means that root 4 is, root x is continuous at x is equal to 4. We are interested in the derivability, and derivability means the existence of this limit x approaches 4 of fx minus fa divided by, a, x minus a. So I am working out, in fact, for derivability, x approaches 4, fx is root x minus value of the function is root 4 divided by x minus 4. Now, working out left-hand derivative at 4 means I'm working out this limit delta approaches 0 of root of 4 minus delta minus root 4 divided by minus delta. X replaced by 4 minus delta, 4 cancelled out, and we are left with this. Now, working out this limit, I can do some algebraic steps like taking root common in the numerator, root 4 common,
and that will take 2 outside. And what I'm left with is, let me take negative common. It will make it 1 minus what? Under root 1 minus 1 upon. No, why 1 upon? Delta upon 4 divided by minus delta. So I have limit delta approaches 0, 2 upon delta outside. What is inside is 1 minus 1 minus delta upon 4 raised to power 1 by 2. Now this can be simplified using the binomial expansion of 1 minus x raised to power n. That goes like 1 minus nx plus n into n minus 1 factorial. Sorry, n into n minus 1 upon 2 factorial x square, etc. Because inside ये negative sign है तो alternate plus minus sign चलेंगे. So it is an infinite expansion. When you simplify this, what happens? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप में आपने ये माइनस जी लिखा है क्या? इस स्टेप में लिमिट डेल्टा अप्रोचेस 0 2 upon delta. हाँ जी, ये क्या है सर? ये 8 क्या डेल्टा के ऊपर क्या है? 2 upon 2 ये वाला 2 और ये वाला डेल्टा अलग कर दिया. And I'm playing with this now only. जी जी सर समझ आ गया. So 2 upon delta outside, 1 minus this expansion according to this binomial. So 1 minus 1 by 2 delta by 4 plus 1 by 2 1 by 2 minus 1 divided by 2 factorial into delta square upon 4 square. I'm not writing down the rest of the terms, but we see that this one cancels out with this. Delta approaches 0 of 2 upon delta. Inside, 1 minus 1 is 0 plus delta by 8. ये नंबर क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा और बाहर के नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा. ये नंबर this algebraic simplification you can work out yourself. What I'm trying to tell you is that there will be some constant 1 by 2 minus 1 by 2 यानी negative 1 by 4 जिसको मैंने पॉजिटिव लिख दिया ऑलरेडी. और बाकी क्या है? 2 फैक्टोरियल नीचे यानी 2 है तो 1 by 8. So 1 by 8 into delta raised to power 2 upon 4 raised to power, it should be 2. Second term, degree term है ना, तो delta upon 4 की first power, second power, so 16. Similarly, the next term will contain delta. Every other term will contain delta. Delta taken throughout common will cancel out with this delta. So the simplified form of this will be 2 times 1 upon 8 plus terms involving delta. Involving delta, delta square, delta cube, etc. So when I applied limit delta approaches 0, ये सारा part 0 हो जाएगा. What I am left with is only 1 upon 4. ये मैंने left derivative निकाला. I can convert this left derivative. सर मुझे ये नहीं समझ आया कि है ना जो डिनोमिनेटर वाला डेल्टा है वो कहाँ चला गया? डिनोमिनेटर वाला डेल्टा बाहर है ना बेटा, 2 upon डेल्टा ये. सर बिल्कुल लास्ट स्टेप में. लास्ट स्टेप में इस हर टर्म में डेल्टा है मौजूद. उस अच्छा तो कैंसिल आउट किया आपने? कॉमन निकाल के इससे कैंसिल किया
तो ये बना 1 ओके अपॉन ओके, डेल्टा, 1/8 हो गया। उससे अगली टर्म में डेल्टा स्क्वायर, उसमें अगली टर्म में डेल्टा क्यूब. So this will be after taking delta common, cancelling it out with this delta. Inside this bracket, you will be left with 1 upon 8 and terms involving delta, delta square, delta cube, etc. So what is the ultimate limit is 1 by 4. So I was mentioning that when you are working left-hand derivative, you replaced x by 4 minus delta. जब तुम राइट हैंड करोगे तो ये माइनस जहाँ हमने लिखा है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा. अब अलजेब्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय प्लस माइनस के, लेकिन वो भी अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा. लीव आउट, सो फाइंड योरसेल्फ. ओके, मैंने बता दिया कि क्या क्या चेंजेस होंगे, बाकी अलजेब्रा जो है एज इट इज होगा. ठीक है जी. So I hope you can इस प्रॉब्लम को करने के लिए आर्बिट्री पॉइंट दिया है उसने, लेकिन जब तुम इस प्रॉब्लम को करोगे तो x माइनस यानी लिमिट x अप्रोचेस x नॉट ये तुम्हें वर्कआउट करनी होगी. फॉर कंटिन्यूटी फंक्शन की लिमिट, फॉर डिराइवेबिलिटी किस चीज़ की लिमिट, for derivability you will require limit x approaches x naught of e power x minus e power x naught upon x minus x naught. जब तुम x को x naught माइनस डेल्टा रखोगे तो लेफ्ट डेरिवेटिव आएगा, x को x naught प्लस डेल्टा रखोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा. और फिर लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए जब तुम काम करोगे तो वो कुछ ऐसा होगा, e पावर x नॉट माइनस डेल्टा माइनस e पावर x नॉट होल डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा. बिकॉज डिनोमिनेटर में जब तुम x नॉट माइनस डेल्टा रखोगे तो x नॉट कैंसिल हो जाएगा. एंड यू सी दैट व्हाट हैपेंस कि नाउ यू कैन टेक e पावर x नॉट कॉमन डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा, और अगर तुम माइनस कॉमन निकाल लो तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस, यहाँ से पॉजिटिव 1 और यहाँ से नेगेटिव e रेज़्ड पावर माइनस डेल्टा. पिछली दफ़ा प्रॉब्लम में हमें बाइनोमियल लगाना पड़ा था, इस दफ़ा इस प्रॉब्लम में इसका एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा. कौन सा वाला, e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. एंड यू विल फाइंड आउट दैट जब तुम इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो एवरी टर्म विल बी नेगेटिव. बाहर तो पॉजिटिव आ चुका है. अल्टीमेटली होगा क्या, जब तुम ये यहाँ पे माइनस डेल्टा आएगा, यहाँ माइनस डेल्टा स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये 1 इस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी देख लेना. डेल्टा कॉमन निकल आएगा, डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, डेरिवेटिव जो है ई पावर एक्स नॉट बचेगा, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है. एट एक्स नॉट इट शुड बी ई पावर, डेरिवेटिव शुड बी ई पावर एक्स नॉट. लेफ्ट हैंड का मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे. आई थिंक रेस्ट ऑफ द स्टेप्स यू कैन डू. मैंने लिमिट वेमिट नहीं लिखी, लेकिन यू हैव टू understand that there is a limit delta approaches 0. Now this problem, I take this as the x cube and describe this solution to this problem that we are asking कि इसको prove करेंगे derivable है at x is equal to 0, that और मजीद ये कि fx और f prime x are continuous. So should I discuss this problem or leave it for your exploration? डिस्कस कर लें. हर सवाल जो मैं तुम्हें पूछूंगा
तुम यही कहोगे। अच्छा जी, दिस प्रॉब्लम इज function involved is x power 3 sine of 1 upon x when x is not equal to 0, and it has value 0 when x is equal to 0. So, what about function value at 0? हमसे कहा गया कि 0 पे इसकी देखें कि ये derivable है नहीं. Prove that the function has a derivative at x is equal to 0 is the question. तो और उसके बाद एफ एक्स और एफ प्राइम एक्स कंटिन्यूस हैं, तो हम क्यों नहीं अपने यूजुअल स्टेप्स पे चलते हैं. यानी सबसे पहले राइट डाउन द फंक्शन वैल्यू डिफाइंड एज जीरो एट एक्स इक्वल टू 0. सो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो चूंकि आप 0 पे नहीं काम कर रहे हैं तो हम ये इस्तेमाल करेंगे. सो एक्स क्यूब साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, और लेफ्ट लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा अप्रोचेस 0. अभी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी एक्सप्लोर कर रहे हैं. Now, when we replace this, it means 0 minus x replaced by 0 minus delta cube sine of 1 upon 0 minus delta. Now, note that minus delta cube will be negative. Sign of a negative number is minus sign of that number. So negative sign goes out of discussion, and we are left with the limit of delta cube into sine of 1 upon delta. Now the limit of delta cube as delta goes to 0 is 0, whereas the limit of this function, sine of 1 upon delta, when delta goes to 0, the sine argument becomes very, very large. So this goes to 0, but this may be any number from -1 to 1. But in the product, whether this is -1, minus 0.5, 0, 0.1, 1, so 0 into any number will ultimately be 0. So that gives you the left-hand limit of the function. Similarly, if you go for evaluating x approaches 0 from right-hand side of this function, you will again find that the limit is 0. 0 plus delta करोगे, 0 plus delta करोगे, same argument से limit 0 आ जाएगी. So at this stage, what we have done is left-hand limit is equal to right-hand limit is equal to function value at 0. So this means a given function is continuous at x is equal to 0. Now we work out the derivative. For that, working out derivative from the left-hand side, this. Now we have set the procedure limit delta approaches 0 from the left-hand side. For what? For the function 0 minus delta minus function value divided by minus delta. This as a formula we have decided about in the discussion above. So let us write down, sorry. Delta approaches 0. Now minus delta replaced in this function. And we know that this will be minus delta cube plus, because of sine of minus 1 upon delta minus 0 divided by minus delta denominator. अच्छा, ऊपर का जो नेगेटिव है, जो when I will replace x by minus delta,
तो माइनस डेल्टा क्यूब से माइनस आएगा और साइन ऑफ लास्ट स्टेप सही, लास्ट स्टेप में क्या है आपने ये बताएं। ये जी जी, इसके आगे इसके आगे क्या किया है? जी मुझे इस चीज की लिमिट निकालनी है, राइट? क्या चीज है जी ये? वैल्यू ऑफ एफ एट जीरो माइनस डेल्टा, वैल्यू ऑफ एफ एट जीरो डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा, ये मेरा स्टैंडर्ड रूल है फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सो इन द न्यूमरेटर what will I write? In the denominator I have this. Now what is the function when argument is not zero? The function is x cube into sine of 1 upon x. तो यहां मेरे पास आर्गुमेंट माइनस डेल्टा है, तो x की जगह पे क्या आएगा इसमें? माइनस माइनस डेल्टा क्यूब साइन ऑफ 1 upon minus delta minus what's the function value at zero? 0. 0। So what I'm left with, एक नेगेटिव साइन के अंदर से बाहर आ रहा है, एक नेगेटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, तो ओवरऑल नेगेटिव डेल्टा स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन डेल्टा बचा मेरे पास। Due to the same argument, when delta becomes very, very small, this term goes to 0, whereas this term, 1 upon delta, goes to very, very large number, where sign can be anywhere between -1 and 1. So 0 into some number is ultimately 0, which is the left hand derivative. और ये procedure तुम अगर repeat करो, sorry, right derivative के लिए, so what should the change? यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव होंगे और नीचे भी पॉजिटिव होगा, तो ये विल बी वर्किंग आउट ओनली दिस लिमिट डेल्टा स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन डेल्टा। और नेगेटिव्स का गेम नहीं है, शायद क्योंकि 0 प्लस डेल्टा है, so they are all positive and this will all be so be 0. So we see that left derivative of the function at 0 and the right derivative of the function at 0 are equal, and this means f given is derivable at x is equal to 0. Now the rest of the part of the question was कि function continuous है, तो function continuous हम दिखा चुके, right? ओरिजिनल पार्ट था कि फंक्शन डेरिवेबल यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है x इक्वल टू 0 पे, ये हम ये शो कर चुके। उसने मजीद कहा है कि f प्राइम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो भाई x प्राइम फंक्शन तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने तो f प्राइम एट x इज इक्वल टू 0 निकाला था। So from this function, can I write down f prime at 0 available है मेरे पास at x is equal to 0, but the derivative of this function when x is not 0, मैं निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? So x cube का derivative, what will be the x cube derivative? 3x square 3x square sine 1 over x as it is plus x cube into sine के derivative cos of 1 upon x into times derivative minus 1 1 upon x का derivative minus 1 upon x square. So this x square cancels with this cube, and what I'm left with is
एक्स क्यूब साइन 1/x इस नेगेटिव की वजह से माइनस एक्स साइन, नो दिस इज नॉट साइन, cos of 1/x। अब ये नया फंक्शन आ गया, डेरिवेटिव फंक्शन, which is also piecewise defined. So when x is not equal to 0, the derivative is this. When x is equal to 0, derivative is 0. अब तो ये आपने एक्स क्यूब आपने कैसे लिखा है? 3x² है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। सॉरी। अच्छा जी, अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब है मैं पहले लिखूं फंक्शन का, इस डेरिवेटिव फंक्शन का की वैल्यू एट 0, फिर मैं लेफ्ट लिमिट निकालूं x अप्रोचेस 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ f प्राइम x, फिर मैं राइट लिमिट निकालूं x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड ऑफ f प्राइम x। तो इस फंक्शन की लिमिट जब तुम ये लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो तुम्हें f प्राइम में माइनस डेल्टा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जब राइट लिमिट निकालोगे तो f प्राइम में डेल्टा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राइट लिमिट निकाल रहा हूँ तो 3 डेल्टा स्क्वायर साइन ऑफ 1/डेल्टा माइनस डेल्टा कॉस ऑफ 1/डेल्टा। As delta approaches 0, what will happen to this? Delta square 0 हो जाएगा, 1/delta very large, where sign values will be again 0 between -1 and 1. इसी तरह cos values when 1/delta with delta very small, this 1/delta is very large, and cos values will also be lying between -1 and 1. But outside is delta, which is going to 0. So f prime delta is going to 0. अच्छा जी, एक तो है इशू इस पूरी शीट पर कि what we have tried to do in this part, this was exploring the continuity of this function. कंटिन्यूटी में हमने फंक्शन की वैल्यू देखी और फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट देखी, सब कुछ बराबर आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, राइट? उसके बाद हमने फंक्शन की डेराइवेबिलिटी देखी, इसका मतलब है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इवेल्युएट किया जो 0 आया, और ये हमने समझाया कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ गए तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किया। So what is this first part? Exploring continuity of the function at x is equal to 0. This part is exploring derivability at x is equal to 0. And we obtained that the derivative of the function at 0 is 0. Last part में हम explore कर रहे हैं continuity of the derivative function. So derivative function की जब हमने continuity discuss करनी है तो derivative function की value at 0 अभी हमने निकाली है, 0 है, whereas rest of the domain for the derivative function 0 पे 0, बट अदर देन 0 हमने फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा और इस तरह से हमने पूरा डेरिवेटिव फंक्शन बनाया। जब हमने डेरिवेटिव फंक्शन बना लिया तो अब डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू एट 0, डेरिवेटिव फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, डेरिवेटिव फंक्शन की राइट लिमिट। तो इस फंक्शन को इस्तेमाल किया हमने डेरिवेटिव फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट डिस्कस करने के लिए, एंड वी फाइंड दैट दिस लिमिट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन
is 0 whether you consider approaching from left side or from right side. So this part is continuity of f prime. This part is derivability of f. This part is continuity of f. I hope now it is clear. Under these instructions, repeat all the steps. Continuity of function एक चीज है, derivative at 0 of the function एक चीज है, और फिर at 0, and then derivative as a function और उसकी continuity, and उसकी continuity में function derivative की 0 पे value, derivative की 0 पे left limit, derivative function की 0 पे right limit. Complete steps लिखो इसके साथ, लिख के इसको करो और मेरा ख्याल है असाइनमेंट में जमा करा दो. बड़ी खामोशी है सर. कौन सा असाइनमेंट सर? अरे छोड़ो, ऐसे ही कह रहा हूँ. हाँ सर, इसका अलग दीजिएगा, वो अभी हम पहले वाला कर लें फिर. ठीक, ये बात समझ में आ गई सारी? जी 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 सर, समझ आ गई. That's good. That's good. Going back to this exercise. अब देखो, ये जो अभी हमने प्रॉब्लम किया है ना, ये वाला, अगर तुम्हें वाकई समझ में आ गया है, एक ओवरऑल पिक्चर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे जहन में बनी है कि नहीं बनी. अगर मैं इस फंक्शन को चेंज करके यहाँ एक्स क्यूब की बजाय एक्स स्क्वायर कर दूं, तो क्या फंक्शन अभी भी कॉन्टिन्यूस होगा? नोट दैट अब बाहर एक्स स्क्वायर है. क्या इस लिमिट में फर्क पड़ेगा? एक्स स्क्वायर विल अप्रोच टू 0 एंड दिस अप्रोच टू -1 to 1. कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा. गुड. डिराइवेबिलिटी में फर्क पड़ेगा? अब के बाहर जो है वो एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर होगा. एंड दैट डेल्टा स्क्वायर विल कैंसिल आउट विद द डेल्टा इन द डिनोमिनेटर. तो डेल्टा बचेगा. तो क्या इस लिमिट में फर्क पड़ेगा? नहीं तो. इसमें भी नहीं पड़ेगा. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आएगा अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर कर दूं. जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा? जब मैं इसका डेरिवेटिव सर लूंगा 2x हो जाएगा. ये तो 2x हो जाएगा. यहाँ क्या होगा? ओ, यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में फिर एक x आ जाएगा. नहीं 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 सर, वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल हो जाएगा. पूरा पूरा जब कैंसिल हो पूरा जाएगा. पूरा अगर कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ cos ऑफ 1 अपॉन एक्स होगा. जब जी. cos ऑफ ये 1 क्या अपॉन होगा एक्स सर? तो इसकी लिमिट तो 0 आ जाएगी. इसकी लिमिट 0 -1 to 1 होगी. इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओ अब जो मैंने तुमसे बात अच्छा की है, सर, आइडिया ये अगर कि है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर कर दूं, तो इनमें से क्या क्या पॉसिबल होगा और क्या पॉसिबल नहीं होगा, इसको एक्सप्लोर करो. एक चीज. सर एक और चीज. हाँ बोलो. सर अगर एक्स क्यूब की जगह जैसे आप एक्स स्क्वायर का बता रहे हैं, अगर वो भी छोड़ दो, एक्स हो सिर्फ, तो सर जी हमारी है जी, ना जो अगला सवाल था मेरा. डिराइवेबिलिटी है, अगला उसमें सवाल भी मेरा मसला आएगा. अगला सवाल मेरा यही था कि अगर मैं इसको सिर्फ एक्स कर दूं तो क्या होगा. सर फिर तो डिराइवेबिलिटी में भी मसला आएगा ना. एग्जैक्टली और अगला सवाल यही है. ये देखो. अच्छा सर, आप क्वेश्चन पहले यही से है. बना के रखते हैं सारे. बेटा जो चीज डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं कह लो कि स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप कर रहा हूँ ना. मैंने नहीं बनाया, ये एक्सरसाइज किताब की जी एक्सरसाइज है और सर. उसी की जी. सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन हम्म. डिस्कस करके मैंने जो कुछ डिस्कस किया अब ये तुम खुद कर लोगे. जी सर, इंशाल्लाह. एग्जैक्टली. इस तरह का सवाल मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. डिस्कस द डेरिवेबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, or do I need to discuss the derivability of this at x equal to 1?
And what about this? And what about this? Let me consider this last piecewise function here in this third part. करूं? या आप लोग खुद हिम्मत करोगे? जल्दी बताओ. सर ट्राई कर सर लेंगे कर लें पे कि नहीं सर आप कर लें क्योंकि अगर हमसे नहीं हुआ तो है ना फिर हम देखो वापस कब कंटिन्यूटी उस पे डिस्कस नहीं रिविजिट करूंगा, करेंगे. डेरिवेटिव डिस्कस करूंगा. हाँ जी जी सर ठीक है. ठीक है. So I have this question in front of me, so I switch the screen to uh, clear this mess. The function defined fx is equal to 2x minus 3 when x lies between 0 and 2 and x square minus 3 when x is between 2 and 4. उसने डेरिवेबिलिटी डिस्कस करने को कहा है इंडिकेटेड पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 2 and 4. अच्छा जी, सबसे पहले डेरिवेबिलिटी के लिए भी मुझे वैल्यू ऑफ द फंक्शन चाहिए. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन? सॉरी, दिस इज नॉट, आई एम फर्स्ट वर्किंग एट 2. x इज इक्वल टू 2 डोमेन के किस पार्ट में, पहले में या दूसरे में? पहले में सर. So 2 into 2 minus 3 is 1. So I have got function value 1. And now I have to work out the limit x approaches to fx minus f2 divided by x minus 2 for the derivability. और हमने ये तय किया हुआ है कि जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो we will be working with limit delta approaches 0 of f at 2 minus delta minus f of 2 divided by 2 minus delta minus 2, जो कि कैंसिल हो जाएगा. मैंने तो तय किया हुआ है कि डिनोमिनेटर माइनस डेल्टा होगा हमेशा. The work actually begins here. Now 2 minus delta is to the left of 2 or to the right of 2? 2 minus delta is to the left of 2 or right of 2? लेफ्ट ऑफ 2 सर. Left of 2 is what region? This or this? फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला. इसका मतलब है मैंने 2 माइनस डेल्टा इसके अंदर रखना. जी सर. 2 times x की जगह 2 माइनस डेल्टा. यार मैं इसको साफ कर दूं, अभी तक ये काबू में नहीं है मेरे पेन. x की जगह 2 माइनस डेल्टा minus 3 in the first part, first piece of the function, minus function value at 2. Function value of 2 हमने ये निकाली है 1 divided by minus delta. So algebraic simplification rather. 4 minus 4 साफ हो गया? Okay, let me write down 4 minus 2 delta minus 4 divided by minus delta. This 4 cancel, minus delta cancel, limit comes out to be 2, which is the left hand derivative. आ गया समझ में? Yes sir. Okay, so let us work out the right derivative at 2. Limit delta approaches 0 of f of 2 plus delta minus f of 2 divided by delta. Now 2 plus delta is to the right of 2 or left of 2?
That means we are working Right of 2. right means we are working in this part of the domain. So function का ये वाला पीस इस्तेमाल होगा अब किसके लिए? x की जगह 2 plus delta रखने के लिए. 2 plus delta is to power square minus 3 divided by minus delta. So algebraic simplification takes us where 2 plus delta whole cube is 8 plus 3 times 4 yani 12 delta plus 3 times 2 yani 6 delta square plus delta cube. सर होल क्यूब है या होल स्क्वायर है? ओह तो होल स्क्वायर है इस बात ही हो गया था. सर डिनोमिनेटर में माइनस साइन आएगा? नहीं 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 आएगा. नहीं सर सर ये इसमें नहीं आएगा, ये राइट हैंड साइड से है ना, इसमें पॉजिटिव डेल्टा होगा. चलो जाग रहे हो तुम लोग माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह सर. वेरी गुड. मगर ये सारी चीजें जो है ना कैल्विन की हैं. Okay जी, now we are in a strange problem. 4 minus 3 is 1. सर आपने नहीं -1 एक मिस कर दिया ना. सर F2 जो होगा दैट इज -1, तो वो पूरा -4 -3 -1 होगा सर बेसिकली. सर -3 तो होगा सर, -3 आएगा. -3 इसकी वजह से आएगा. इसकी वजह से आएगा और उसके बाद -F2 का -1 आएगा. ओके बच गए. मैं फिर जज्बाती हो गया. कट जाएगा सर वैसे अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो. हाँ होगा ऐसा. हाँ तो उसमें फिर जब डिराइवेबल नहीं होगा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. अभी भी देखो क्या सूरत हाल है. अभी भी नहीं आएगी ये सर, अभी नहीं आ रही है. 4 प्लस डेल्टा. ये एक्सप्रेशन बना 4 प्लस डेल्टा. लिमिट x approaches delta approaches 0. This becomes 4 delta upon delta, that is 4, and delta square upon delta, that is delta. So 4 आ गया. Now right hand derivative is 4, the left hand derivative is 2, which is pretty obvious because on the left hand side we have a linear function, on the right hand side we have a quadratic function. So we see that left derivative of the function at 2 is not equal to right derivative at 2. So the function is not derivable at x equal to 2. When it's asking about 4, तो भाई बात ये है कि मेरा जो डोमेन है ना उसके दो हिस्से हैं. एक 0 से 2 तक है और एक 0 से 0 नॉट इंक्लूडेड 4 तक है. तो 4 मेरा राइट हैंड पॉइंट है. जब राइट हैंड पॉइंट है तो मैं सिर्फ लेफ्ट डेरिवेटिव निकालूंगा. लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ f at 4. Left derivative at f of f at 4 means delta approaches 0. And in this part of the domain, the function is defined as this. So x replaced by 4 minus delta square minus 3 minus the function value. What is the value of the function at x is equal to 4? X is equal to 4 plus 16 minus 3 is 13 divided by delta negative. So limit delta approaches 0 of 16 minus 8 delta plus delta square minus 16 cancel out divided by minus delta, and we come out to find that limit delta approaches 0. Minus 8 delta upon delta means 8 or minus delta, and that gives 8. ये चूंकि वन साइडेड डेरिवेटिव है लिहाजा इसकी कंपैरिजन मैं राइट डेरिवेटिव से नहीं करूंगा क्योंकि x इज इक्वल टू 4 के बाद फंक्शन डिफाइन नहीं है. And we see that this is a polynomial first degree derivable for all points between 0 and 2. This is a second degree polynomial which is derivable for every point between 2 and 4, but not at 2.
So this is not derivable for the whole domain of this function. Okay? सर फर्स्ट वाले 2 के लिए तो डिराइवेबल नहीं है, जो 4 वाली चीज है उसमें हमने दूसरी वाली नहीं निकाली, तो हम उसका क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम्म The conclusion is a left hand derivative at a right end point, that is x is equal to 4, exists बस. ओके मतलब सर डिराइवेबल नॉन डिराइवेबल का उसका कुछ नहीं बताया ना? नहीं, सिर्फ एक साइड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, दैट इज इट. इसी तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ द होल डोमेन. तो यहाँ पे राइट डेरिवेटिव निकाल के छोड़ देंगे. सर ये आरईपी क्या होता है? पता नहीं क्या. राइट सर हैंड किसका? राइट अच्छा हैंड राइट पॉइंट. हैंड पॉइंट. चलो ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में. नहीं सर मत लिखिए, बस सुन लिया मैंने. हाँ, ये इस तरह की मैं बोलते बोलते ना एब्रिविएशंस लिख जाता हूँ और फिर खुद ही इतराज करता हूँ कि बच्चे देखो आजकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हॉट कहते हैं. rep and rep is right hand point. Anyways, let us see some other problems. मैं बहुत slow हूँ आज. I'll not discuss this function. You explore it yourself. You know the tools. At x equal to 0, what's the value of the function? और fx minus f0 divided by x minus 0, लेफ्ट साइड से कैसे निकालना है, राइट साइड से कैसे निकालना है, बस ये याद रखना. ये याद रखना बस. मैं नोटेशन से तुम्हें दिखा देता हूँ कि मॉड ऑफ माइनस डेल्टा कहीं आएगा तो दैट विल बी डेल्टा. मॉड ऑफ 3 माइनस डेल्टा कहीं आएगा, दैट विल बी डेल्टा माइनस 3. Because mod x is defined as x for each x greater than or equal to 0, but changes sign when x is less than 0. So 3 minus delta जब भी तुम evaluate करोगे, sorry, ये सही नहीं है. 3 minus delta is a number very close to 3. So that will remain as it is. लेकिन minus delta only in the absolute sign will be dealt with as delta, क्योंकि तुम्हें इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, etc. ठीक है. सर आपको ये एक मॉड वाले का भी एग्जांपल करा देंगे क्या? बहुत अलग होगा करते हुए. नहीं नहीं, अरे बेटा without geometry, let us work out f of 1. 1 minus 1 plus 1. Result is 1. And left derivative at 1. Limit delta approaches 0 of f of 1 minus delta minus f of 1 divided by minus delta. So limit delta approaches 0. 1 minus delta function रख दो. 1 minus delta minus 1 plus 1 minus delta divided by minus delta. Limit delta approaches 0. यहाँ पे 1 और 1 cancel हो गए. Minus delta will become delta. 1 minus delta is a number very close to 1. It will remain as 1 minus delta divided by minus delta. ऊपर से cancel हो गया और ये क्या आ गया? ये तो माइनस इन्फिनिटी आ गया. सर आपने एफ ऑफ 1 पे नहीं किया. f of 1 नहीं लिखा. सर एफ ऑफ 1 तो 1 ही है ना, आपने 1 माइनस डेल्टा क्यों लिख दिया? माइनस एफ ऑफ 1 इज देखिए 1 ना. ये f of 1 मैंने f of 1 लिखा ही नहीं. हाँ जी जी सर, आधा जी पढ़ सर के आपने तो एफ ऑफ 1 -1 आधा नहीं.
तो ये 0 हो गया, माइनस डेल्टा कैंसिल हुआ, 1 भी कैंसिल हो गया, तो बिफोर डेल्टा गोज टू वेरी स्मॉल नंबर ये 0 हो गया। अच्छा जरा अब ज्योमेट्री देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव तुम लोग खुद कर लेना। ज्योमेट्री देखते हैं। When x is equal to 0, what's the value of the function? Positive 1. When x is equal to 1, what's the function value? 1. So these are, एक रीजन ये है डोमेन का, एक रीजन ये है डोमेन का, और एक रीजन ये है डोमेन का। राइट साइड पे ये x माइनस 1 प्लस एक्स होगा, यानी 2x माइनस 1 होगा फंक्शन। इन बिटवीन क्या होगा? इन बिटवीन भी ये x माइनस 1 नहीं, ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। Do you know this? If you have got fx is equal to mod x minus 1, how it is defined? It will retain its sign for every x greater than or equal to 1, but it will reverse its sign. Are you familiar with this idea? Yes sir, ये पता है। पता है ना? तो in between इसका कंट्रीब्यूशन माइनस एक्स प्लस 1 होगा और इसका कंट्रीब्यूशन x ही होगा, क्योंकि ये 0 के साइड राइट पे है। तो यहाँ x कैंसिल हो गया, तो बीच में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। राइट साइड पे ग्राफ जो है इट इज, अबे यार इसका बटन दब गया। सर ये माइनस एक्स प्लस 1 वाली चीज नहीं समझ आ रही मुझे, लेकिन एक मिनट जरा। एक मिनट। जी सर। ओह मतलब सर मुझे ये समझ में आ गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आपको कैसे पता यही वाला पार्ट है जिस पे स्ट्रेट लाइन आएगी। ये इसका बटन एक दब गया है, कोई जो प्रॉब्लम इसने करनी शुरू कर दी। हाँ, राइट साइड सर मुझे पे ये समझ में आ गया कि माइनस एक्स प्लस 1 एक हो जाएगी सिचुएशन, एक हो जाएगी एक्स माइनस 1, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इस साइड पर ही आ रही है। तो पीस वाइज फंक्शन नहीं बनाया तुमने कभी इसका? शायद सर। इसके 3 पीसेस होंगे, एक x लेस देन 0 पे होगा, एक बिटवीन 0 एंड 1 होगा, और एक बिटवीन एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। जी सर। ठीक है, हाँ जी जी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। इनमें से किसी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं दोनों की ग्राफ अलग अलग बनाऊं, एक ग्राफ ये है मॉड एक्स, और दूसरा ग्राफ क्या है? मॉड एक्स माइनस 1। तो ये x है, ये x माइनस 1 है, 1 है। तो ऑन द राइट साइड ये दोनों ऐड होंगे। या हाँ इन बिटवीन एक x है और एक माइनस एक्स प्लस 1 है। जी सर। तो माइनस एक्स प्लस 1 और x ऐड होंगे तो ये x जब कैंसिल होंगे हो 1 जाएगा, हो जाएगा। ये बीच का वह हिस्सा 1 हो गया, और लेफ्ट साइड का हिस्सा ये माइनस एक्स माइनस 1 है और ये माइनस एक्स है, तो यहाँ आएगा माइनस 2x माइनस 1। और अगर मैं बीच में प्लस जी के बजाय माइनस कर दूं तो अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे। अब जी सर। देखो कि मेरे पास जो डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड 0 आया है, किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 होना ही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? एंड x इक्वल टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव इसके हिसाब से आएगा। जी सर 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, और यही एक्सरसाइज में यहाँ पे रिपीट करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आएगा तो और लेफ्ट -2 माइनस 2 आएगा।
अच्छा जनाब, so that's a lot of discussion on derivability. ये part जो है question number 9, I'm leaving it for your exploration. Independently, they are real good questions of your level, not of calculus, elementary calculus level. इससे पहले के अक्सर questions elementary calculus questions हैं. ये देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे ना, एक्स क्यूब के बजाय एक्स स्क्वायर हो या एक्स हो तो क्या होगा, इसने अब जनरलाइज कर दिया एक्स पावर एम. और ये तो इसमें सर हम m की रेंजेस बताएंगे कि इस अगर ये वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, ये सब कुछ हम डिस्कस करें. Derivability at origin also determine m where f prime is continuous. तो हमने देखा था f prime continuous हुआ था x पावर 3 पे जाके, x पावर 2 पे भी शायद continuous नहीं होगा. ओके जी. Oh, 5:30. So I stop this session, have a break, and meet about half an hour later again. Okay? तो सर फिर हमारा 40 मिनट सेशन होगा ना? ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारे जहन में उठाना है. और एक रिक्वेस्ट ये करनी है, मैंने चारों लेक्चर्स जो रिव्यू ऑफ कैलकुलस के थे वो यूट्यूब पे डाल दिए हैं. जी सर. उनको जरूर सुन लेना. बहुत सारी बातें रिपीटेशन हो रही है इस वक्त उनमें से. वो रिव्यू किया गया था कि अब इस वक्त जो हमने कंटिन्यूटी और डिराइवेबिलिटी में जितना कुछ डिस्कस किया है वो वहां पे है. राइट नाउ मैं अपने सेशन क्लोज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ.